ahead, we have more news coming in at this point in time. Swati Maliwal has hit out at the Aam Aadmi Party for Atishi's CM appointment. Alleges Atishi's family tried to save Afzal Guru. Maliwal has taken a dummy CM job at Atishi. AAP demands Maliwal's resignation from party. AAP says Swati goes to Rajya Sabha from AAP and reads the BJP script. AAP says no morality and shame left. Swati must resign is what they're saying. आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। I'm going to go straight across to Amit Bhardwaj for more details in that story. Amit, the Aam Aadmi Party obviously upset. They're asking her to resign, but what stops them from taking disciplinary action against Swati Maliwal? Give us an idea about whether that is expected now. There are two aspects to this entire development. One, what Swati Maliwal said, the Aam Aadmi Party is saying that she's playing by the BJP script, and hence they have sought the resignation of Swati Maliwal on the moral grounds and telling her to, seek a ticket, Rajya Sabha ticket from the BJP. Now, the second aspect is about, practicality. If Aam Aadmi Party takes action against Swati Maliwal, a disciplinary action of sorts, that would mean that she would not lose her Rajya Sabha seat. And that is why, even after what all has happened so far, the party has not acted against her as far as the disciplinary action is concerned, because they don't want to lose upon that Rajya Sabha seat. The moment you take any disciplinary action, assuming that she gets expelled from the party, in that case, she will continue to remain the Rajya Sabha MP, and hence no such disciplinary action is being taken by the Aam Aadmi Party. Rather, they are waiting for the moment for Swati Maliwal to commit a blunder of sorts, for instance, defying the whip. And in that particular Come back to you in a moment from now. In fact, we have a reaction coming in from the family member of Atishi. Let's take a listen to what Atishi's mother has said. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. Listen in once again to what the mother of the new CM designate has had to say. Happy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. This is an old video which has been circulated by Swati Maliwal, and she's referring to that, saying that she's a supporter of Afzal Guru. That's what Swati Maliwal has said, referring to the mother of Atishi, the new CM designate here. Swati Maliwal taking a jibe at Atishi and her family, saying that they supported Afzal Guru, also talking about a dummy CM. And after much suspense, Delhi has got its new chief minister. Delhi Minister Atishi is taking over as the Chief Minister after Arvind Kejriwal resigned from the top post. Atishi thanked her guru, Kejriwal, for trusting her with a big responsibility. While thanking him, she said that there's only one Chief Minister of Delhi, and that's Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party says she will be the Chief Minister of Delhi only until next polls, and that is February, and will take forward Arvind Kejriwal's work. The development comes 2 days after Arvind Kejriwal announced he would resign as the Delhi Chief Minister within 48 hours. Arvind Kejriwal is set to meet the governor at 4:30 p.m. today and will resign from the CM's post. Atishi will stake claim to form the government today itself. जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है।
दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगे। वो बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई चिंता नहीं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। This is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until Arvind Kejriwal ji comes back. Atishi ji का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे।